By the way, I hope the screen is visible to all of you. If Yes, ma'am. not, यस please मैम don't tell me. खुद अपना solution निकालो. Okay? मैं अपना Okay, I'm just joking. Obviously, you will tell me. Okay. हाँ, चलो शुरू करते हैं फिर. Okay. मैम मीडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म हुआ क्या? हाँ, खत्म. तुरंत और खत्म हो करने गया हैं क्या? और करने का तुम लोग को इडियम्स फ्रेजेस. मैम, मजा आ रहा था मैम यस उसमें। यस मेरे को और एक्सपर्जन करने का मन नहीं. सॉरी. मैं आज मैम ये करना चाहूँ. फिल इन आज द मैम ब्लैंक्स में से उसमें ओके. एटीएम स्पेस पे जाएगा तो फिर मेरा ही इडियम फ्रेज हो गया था उस क्लास में तो. आई एम डन विद idioms and phrases at this point. Anyway. वंस हाँ, चलो guys. Okay guys, so I welcome all of you to another class of SSB Crack Exam. CDS 1 2023 की तैयारी कर रहे हैं. इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स MCQs करेंगे हम लोग. तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है गाइस. वी विल जस्ट हैव अ क्विक ग्लैंस कि क्या क्या चीजों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए. देन वी विल जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट वी हैव. ठीक है. So let's have a quick look at the timetable for today. So today is 16th of February. At 8 a.m. we had Prateek sir's class of monthly current affairs. At 9 we had Anuradha ma'am's class of mock personal interviews. Now if we have to talk about CDS का slot आप सभी लोग देख सकते हो. At 4 we had Satyam sir's class, ठीक है, of maths, and at 5:30 you guys had Prateek sir's class of GK. एंड एट 7 वी गाइज आर हैविंग इंग्लिश का क्लास. फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं. ठीक है. सो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक. लेट्स हैव अ लुक एट द एनालिसिस. सो इफ यू हैव टू लुक एट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वेरियस ईयर्स, आप देख सकते हो कि सारे सालों में आपको 10-10 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं. ना उससे ज्यादा मिल रहे हैं ना उससे कम मिल रहे हैं. आप लोग यहाँ पे खुद देख लो, है ना. आपको 10-10 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं हर साल में. ठीक है. सो if we have to talk about topic importance, तो question would vary. Basic to moderate level of difficulty ही आपको आता है. Extremely difficult questions नहीं आते. But again, I would say this topic is pretty tricky because काफी सारे जो options होते हैं वो confusing हो सकते हैं. So it demands that clear knowledge and understanding on your end of vocabulary. और आपको काफी सारे phrases का idea भी होना चाहिए. ओके. उसी के साथ क्वेश्चन नीड बेसिक टू इंटरमीडिएट रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स तो आप लोगों के होने ही चाहिए. ठीक है. सो नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ. ठीक है. ओके. सो if I talk about fill in the blanks as a topic itself, so what you guys are supposed to do is they will just give you a sentence, right? So that's what they are gonna do, and they will put a blank right there, right? So basically, what you're supposed to do is वहां पे कुछ भी sentence आपको दे देंगे और वहां पे fill in the blanks, right? So they will keep a blank right here, and they will give you 4 options. So you're supposed to choose one of the options out of those 4 options. ठीक है. आपको वही करना रहेगा. Okay. So, what are the things we need to take care of? First of all, we need to understand and read the sentence carefully. It's very, very important. What happens a lot of time is एक जो आपके दो options रहेंगे, it might be going with the option because you haven't read the sentence carefully. So it's important for you to read the sentence carefully क्योंकि negative marking भी होती है. So you need to read each and every sentence carefully. And at the same time you need to understand the structure as well, because जब भी हम लोग fill in the blanks की बात करते हैं, because sometimes what they do is they give you questions related to maybe tenses, maybe related to subject verb agreement, right? So you need to understand the structure of a sentence very, very well so that you can understand, you can answer the question very, very well. ठीक है. उसी के साथ डोंट फॉरगेट टू रिवाइज पार्ट ऑफ स्पीच. अगेन इट्स नेसेसरी. ठीक है. ऑब्वियसली vocabulary is imperative when it comes to fill in the blanks, but at the same time there might be some questions related to part of speech, right? We have already completed it when we were doing spotting of error.
सो इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करें, कवर करते हुए चले। एंड ऑल इन ऑल वोकैबुलरी तो मस्ट होती है, वोकैबुलरी तो आई वुड से टॉप पे आ जाती है, ठीक है। अगर मैं पिरामिड की बात करूँ तो वोकैबुलरी इसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। So these are the things that we just need to keep in our mind when we talk about fill in the blanks. Anyone has any doubt before we start off with the questions? नो Anyone? डाउट मैम। कोई नहीं, चलो। So in the following question, the sentence given with blanks to be filled with an appropriate word. So guys, as I've already told all of you, they will give you a sentence. बीच में हो जाएगा आपका एक पार्ट एकदम ब्लैंक, एंड वहां पे यू हैव टू पुट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, अमॉन्ग्स द ऑप्शंस, राइट। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। उसके बाद आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। सो देखते हैं, शुरू करते हैं कैसा करेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन से विल स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। He was so filled with contempt for the prisoner that he gave him dash look, humiliated, derisive, pitying, or hurtful. ए मैम। Hmm. A, ma'am. Derisive B. अभी देखो, उसको ध्यान से पढ़ो, डेरिसिव क्या होता है? वो मैं आपको अभी बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। यस सर, मैं यस मैम, मेरा भी हाँ। अच्छा, राजदीप की डीपी में तो आंख दिख रही है बस, अब मैंने देखा। यस मैम, बदल लीजिए। ओके। वो प्रिंट वो बनाई है मैम खुद। हाँ, काफी अच्छी है, वही मेरे को लग रहा है कि किसी ने बनाई है, बड़े टैलेंटेड, इसलिए तो बोलते लेजेंडरी क्लास ऐसी थोड़ी बोलते हैं। क्या तुम लोग, हेलो आंसर करो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग, प्लीज आंसर। मैम ए हो गया, वैसे समझ में वही आ रहा है। ओके, सो अब अगर आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, ठीक है, ही वाज सो फिल्ड विद कंटेम्प्ट फॉर द प्रिजनर, ठीक है। सो जब आप किसी के लिए कंटेम्प्ट फील करते हो तो इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू ह्यूमिलिएशन इन दिस केस, बिकॉज इफ आई एम ह्यूमिलिएटिंग समवन, ठीक है, आई एम इंसल्टिंग देम, स्पेशली पब्लिकली। जब हम बात करते हैं ना, आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, जैसे कि होता है ना, कई बार टीचर्स क्लास में बोलते हैं किसी बच्चों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलिएट कर देते हैं उनको, किसी भी बात पे बेइज्जती कर देते हैं, मतलब, ठीक है। सो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। हर्टफुल बी समथिंग विच हर्ट्स यू, ठीक है। पिटी, आप किसी पे दया दिखा रहे हो तो वो भी अलग हो जाता है। सी व्हेन आई से द वर्ड कंटेम्प्ट, सो अगेन यू काइंड ऑफ हेट दैट पर्सन, you don't, you have that strong dislike for that person, so we will go with B because this actually means contempt. Is this clear? Because of that we will go with this, because humiliation तो नहीं हो सकता, humiliating look, humiliated look, ठीक है। I hope it is clear. मैम यस क्या मैम। बोले? I didn't get you. What? मैम डेरिसिव को मतलब मैम एक लाइन में क्या बोला जाएगा, मतलब मीनिंग? मतलब जिसके भी लिए आपके मन में हेट्रेड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे मलाल जैसा होता है ना आपके मन में किसी के लिए, सो इट्स काइंड ऑफ दैट, या। यस मैम। यप, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट समर वी आर गोइंग डैश अ ट्रिप टू कनाडा, टू, फॉर, ऑन और ओवर। टू मैम। मैम ऑन सी। ऑन मैम। सी। बेटा ट्रिप पे जा रहे हो, ट्रिप पे And देखो two. कौन सा प्रीपोजिशन होगा। मैम ऑन ही तो लगाते हैं। Go ये on तो a trip. होगा, ट्रिप पे जा रहे Going हैं। for a बता trip. रही है। चलो सब लोग कनाडा चलते हैं, चलिए राइट, मैम। कनाडा। ओके, नेक्स्ट समर वी आर गोइंग, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव क्लियरली मेंशन कि वो लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर उन लोगों ने ऐसा बोला होता है कि नेक्स्ट समर वी आर, ट्रिप नहीं बोला होता तो हम बोल सकते हैं हाँ टू कनाडा, तो ठीक है। जब भी आप ट्रिप पे आ जाते हो ना,
तो पहली बात है कि जब हम फॉर की एज अ preposition बात करते हैं तो इट इज यूजुअली यूज फॉर सम काइंड ऑफ पर्पस, है ना, कोई पर्पस बताने के लिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आई एम गोइंग टू कनाडा फॉर मीटिंग माई रिलेटिव्स, तो मैंने आपको पर्पस स्टेट कर दिया। ठीक है, ओवर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओवर वुड बी रिलेटेड टू मे बी सम काइंड ऑफ, आप पोजीशन की बात कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट समर वी आर गोइंग, जब भी ट्रिप आ जाता है तो वी गो ऑन अ वेकेशन और वी गो ऑन अ ट्रिप, हमेशा वही preposition यूज किया जाता है। ठीक है, सो करेक्ट एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Romeo and Juliet's dash affairs is probably the most loved of all times. Secret, covert, candid, or clad? हमें ग्रेट पूछते हैं मैम। A मैम। यही तो होना चाहिए मैम। ठीक है, अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि secrete कैसे बोल रहे हो तुम लोग। secretion guys is related to some kind of production, या फिर इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ समथिंग लाइक अ फ्लूइड और समथिंग, हमारी बॉडी से अगर कुछ कैंडिड निकल रहा है। कैंडिड हाँ, लव। जैसे साइंस में यूज नहीं करते, सिक्रीट हो रहा है कोई भी कुछ भी आपकी बॉडी से सिक्रीशन हो रहा है किसी चीज का, तो वो डिस्चार्ज या प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप अफेयर की बात कर रहे हो, और रोमियो और जूलियट का अफेयर ऐसा था कि वो ऐसा खुले में नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो क्लैड भी नहीं हो सकता बिकॉज क्लैड इज यूजुअली कवर, लाइक यू नो व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट क्लोथ्स। ठीक है, आपने हमने आपको ऐसे कवर किया हुआ है, क्लैड इन मे बी अ सूट और समथिंग लाइक दैट, तो उस सेंस में आप उसको यूज कर सकते हो। कैंडिड अगेन वुड बी यू नो यूज फॉर समथिंग विच इज रियली फ्रैंक, तो वो भी नहीं हो सकता। कोवर्ट इसलिए हो सकता है बिकॉज कोवर्ट एज अ वर्ड इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज अ सीक्रेट, secretive as we say. So is this clear to all of you? So B should be the answer. यस मैम। तुमको कैसे पता कि, छोड़ो क्या ही बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, the dash towards the school was very steep. Ascent, 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 accent. मैम ए वाला। आज तो पूरी vocabulary चेक हो जाएगी तुम। ए होगा ना, एसेंड, चढ़ाई इसको बोल सकते हैं। ओके, चलो देख लेंगे कितना सही बोल रहे हो। ठीक है। Accent is actually the way people say things, right? हर किसी इंसान का एक अलग accent होता है. It basically is influenced by their first language. So accent would be a completely different thing. Assent is basically you, you know, जैसा बोलते हैं you agree or something. So it would be related to that. So अभी हमको decide करना है A और B में से। बड़े जोश के साथ बच्चों ने ए बोला है। एक्चुअली आंसर बी है। व्हाई? एक्चुअली see why what is the difference? They both, when it comes to meaning, they both are different. Like something is going up or we are talking about a climb, है ना? But the only difference is ये वाला जो ascend है it is a verb, ठीक है, और ये वाला जो है ये noun है, और यहाँ पे आपको आर्टिकल दिख रहा है तो उसके बाद noun आना चाहिए, हाँ? So यस इस मैम। तो ये ओके मैम। टी वाला जो है ये नाउन होता है एज अ नाउन एंड दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सम इंटरेस्टिंग मैटर्स डैश इन आवर डिस्कशन yesterday came up, got up, came in or came about. Come up. Came up. Came up. Came up. Yes, ma'am. Came up, ma'am.
अच्छा, okay. Okay. Came about. Came about is used for something which begins. So we are talking about some interesting matters dash in our discussion. We are not necessarily talking about the beginning of something. Came about. When I say came in, Hannah, so maybe we are talking about a person who is coming in. So it's not necessarily related to discussion. When I say got up, why would you use got up for discussion? Maybe I can say Ritika got up, है ना? So that would be a completely different thing. We are not talking सोई on नहीं that. अभी तक Okay. बात करके जग रहे हैं। मेरी क्या बोलते हैं? और कितने वो हैं ये बच्चे? रितिका देखो क्या बोल रहे हैं तुम? Some interesting matter came up, है ना? Arise हुए वो, है ना? You were discussing something और एकदम से वो उससे arise हुए, मतलब ऐसा उजागर हो जो हो जाते हैं ना जब आप बात कर रहे होते हो एकदम से चीजें Repeat बाहर करना निकल है के आती है. हाँ. So came up. So that would be the answer. Correct. Very good. Any question, anyone? No question? No. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. He loaded the dash of cotton on the truck. Baskets, bales, bunches, or bundles. B or D. बी है, B or D. बी लगता है ना कॉटन का तो। Hmm. B D. मैम. बी मैम होगा मैम। बंडल्स। Okay. बेल ही होगा. Bunches. D. Okay. So when I talk about when you bundle, something up. So bundle में क्या होता है? You basically put things together in a very clumsy manner. Like उसमें कुछ ऐसा order नहीं रहेगा. You just put it together. ठीक है? ऐसा जल्दी जल्दी बंडल कर दिया और चलो ले लो. ठीक है? When I talk about bunching, bunches में क्या होता है? You put things together in a very systematic, organized manner. Like you fold it properly, okay, and then you basically put it. अभी बास्केट तो कुछ भी हो सकता है. लाइक बास्केट कैन बी एनीथिंग. मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंटेनर विच इज लाइक आइदर ओपन और लाइक इट्स क्लोज्ड, इट हैज अ कवरिंग. So we don't actually use it for cotton. When we talk about cotton, we say like a bale, like it's a circular thing that you kind of wrap up, ठीक है, and we call it a bale. ठीक है, so it would be bales. ठीक है guys, so that would be the answer. Next question. Anything is dash which is not against the nature of things. Practicable, parable, probable, or possible. D मैम. D. नहीं, पैरेबल स्टोरी से रिलेटेड होता है जिसमें मॉरल वो होती हैं, मॉरल या फिर स्पिरिचुअल लर्निंग. Practicable would be anything that you can practice, so it's related to that. Probable is anything that is likely to happen. So actually in this case we'll say anything is possible. कोई भी चीज possible है, मतलब कुछ भी possible है which is not against the nature of things. ठीक है, so out of these options the only one which seems to be going is anything is possible. And parable means stories. Yeah, it's actually related to story with moral or spiritual learnings. Okay. Yeah. Next question. Is not learning superior dash wealth then from by or to? मैम 2। 2 मैम. B. Sorry, D. D. D मैम. क्यों then में क्या problem है? What is the problem with then? क्या किसी के पास कोई जवाब है इस क्वेश्चन का? मैम सुपीरियर के साथ आर्टिकल प्रीपोजिशन टू ही लगता है. Very good, Dhananjay. Correct. 2 डी।
Yes. Yes, because when we talk about a hierarchy, like, somebody being superior or somebody being inferior, we don't really say then, है ना? That's a rule that we follow. And from क्यों बोलोगे? Like, we don't use from or by. We are not talking about any instrumental use by or from, like, point to this point. So we will actually say to. That is what we use. That's a rule that we follow. So absolutely correct, guys. Very good. Let's मैम move on to the वो क्या yes. मैम सुपीरियर हायरार्की वाला वो एक बार बता दीजिए ना. Actually, what happens is when we talk about any kind of hierarchy in world, like if I talk about somebody being my senior or somebody being my inferior, so the preposition that I have to use after is like it's a rule that we follow. It has to be to, like he's superior to me or inferior to me. You understand? So that is what we do as per the rule. ओके. Yeah. Okay, next question. A group of agitators dashed the mob to break down the vice chancellor's door. Wished, excited, threatened, or incited? Threatened. मैम एक्साइटेड. नहीं excited तो मतलब won't really go. It's really ambiguous. मतलब उसका कुछ भी ये सेंस मैम निकल सकता है. ये मैम मॉब को एक्साइट कर दिया हो एजिटेटर्स ने. वाइस नहीं चांसलर को. excite तो मतलब फिर अच्छे सेंस में भी तो कहते excited. I am excited. ओके मैम. इनसाइटेड. आप यूजुअली ऐसे नहीं बोलते ना. I am excited to break this door. You don't really say that. So that's what I'm saying. I'm excited to break your bones. You don't say that. Yes, I guess यहाँ पे बच्चे बहुत सीआईडी देखते हैं. अभी भी सीआईडी आता है क्या? नहीं ना. ये आता है मेरा अ, इतना नहीं करता है आता है मैम. पहले. अभी भी आता है. अरे बाप मैम रे, मैम मैम पुराने एपिसोड जाते हैं मैम. अच्छा 18 में बंद हो पुराने. यस मैम सोनी पल पे. हाँ. न्यू भी आता है. गए. पुराने देखो उसमें मजा. हाँ पुराना तो मजा आता है. अभी वाला मजा आता है. मैम आंसर. हाँ वही रुको. A group of agitators. So these people are already agitated. खुद ही इतना ज्यादा agitated है. So they are not just wishing. They are not excited. See, it can't be threatened because threaten में आप क्या करते हो? You are just trying to warn someone. So they are trying to incite someone because incite as a word would mean when you try to instigate someone, provoke someone, या किसी को आप भड़का रहे हो कि भैया करो कुछ तो करो, दरवाजा तोड़ो जाके. ठीक है? जैसा वो होता है ना. So that would be the answer out of these options. यस मैम. ठीक. तो ये हो जाएगा. Next question. Turn the lights dash before you go to bed. On, off, out or down. मैम ऑफ. बी. मैम बी. यस Down. यस मैम बी. हाँ see, turn the lights down तो नहीं हो सकता. Usually, like, some people also say that turn the lights out. But what we need to know is when I say turn the lights out, it can be used for any kind of flame that you have, not particularly for electricity. Okay, because when I say turn the lights off, I am actually using it for electricity. कि आप जो भी चीज electricity के साथ चल रही है उसको बंद कर दो. तो इस वाले सेंस में we should be using off because of that. ठीक है, because हम electricity की particularly बात करें, so it would be a better option. So absolutely correct everyone. Next पे चलते हैं. Okay. There is no dash evidence to support your assertion. Facile, fictitious, facetious, or factual. एक्चुअल. Okay. सी. Hmm. C. Why are students saying C?
Okay, this one is related to something which is too easy. Huh. Fictitious is related to something which is Imaginary. imaginary fiction. Yeah, Hmm. so fiction. This would be related to when you are trying to, deal with a serious situation, but you are, passing those humorous remarks. बट एंड समटाइम्स इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट कुछ लोगों को ऐसा आदत होती है ना कि मतलब सीरियस सिचुएशन चल रही है फिर भी वो अजीब से जोक्स क्रैक करेंगे ऐसे ही हंसने लग जाएंगे सो इट्स रिलेटेड टू दैट okay so there is no obviously when we are talking about evidence so it has to be factual na so out of these options this would be the answer correct let's move on to the next question throw a stone dash the fierce dog at upon on or above A. hmm. B. Okay. B. Mat. What about the people in chat? I cannot see much answers. B, A, B, A. Okay, why are the answers are diverse, huh? Okay. So what we need to know is when you throw something, okay, when I talk about prepositions, so what I need to know is when I throw above, है ना? So let's just imagine this is a dog. This is a dog, okay? So, oh, dog की आँख, एक मिनट. Please excuse my drawing. This is a dog. So, what you need to know is when I throw a stone, right? So, if I throw above it, no, it doesn't go. As a preposition, it won't go in this situation. When I say on, okay, throw a stone on cannot be used, first of all, like as a phrase when I say throw on something. So, like I say, throw on a shirt on yourself. That means you are trying to wear it. And in this case, we don't really say throw on somebody. Okay. And again, upon is used for movement, like when you want to show that movement of something, throw upon. यहाँ से लेके यहाँ तक का when you want to, focus more on the movement of something, like that stone. pelting somebody with a stone बट जब मैं बात करना चाहती हूँ आई वांट टू एम्फसाइज कि उसको उसको आप जैसे कि आपके जो पेरेंट्स है आपको जब चप्पल से मारते हैं तो क्यों क्या उनका इंटेंशन होता है कि वो आपको मारना चाहते थे एक्चुअली वांट टू हिट यू तो आपको अगर कोई ऐसा हिट करने के इंटेंशन से मारता है ना तो उसको बोलते हैं थ्रो एट ओके सो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए A. ए मैम And A. हाँ जब ऐसा मारने के पर्पज से आप पे कोई चीज फेंकी जाए तो आपको एट बोला जाता है ठीक है So that would be the answer. Thank you so much. On. Next question. I dash. He has been caught up in a traffic jam. Suspect, suppose, imagine, or speculate. Suppose. ma'am. B. B, ma'am. A. सपोज ही लग रहा है प्रोपोज़िशन मोस्टली Okay, guys, so let's talk about it. Okay, I dash, he has been caught up in a traffic jam. So in this case, see, when I say suspect, because suspect is more of related to, you are what do you call?
यू आर डाउटिंग समथिंग, आपको किसी चीज पे शक जैसा या कुछ होता है, तो इन दिस केस यू आर जस्ट यू आर नॉट डाउटिंग समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। व्हेन यू आर स्पेक्यूलेटिंग समथिंग यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंटेम्पलेट इट, आप ना उसके बारे में सिर्फ ऐसा बैठ के ना सोच रहे हो, yes ma'am, मतलब अंदाजे कर स्पेक्यूलेशन है, हाँ ऐसे बस बैठे और बस ऐसे जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, ओके ऐसे कंटेम्पलेट कर रहे हो। इमेजिन तो यू कैन इमेजिन एनीथिंग ना, आपका इमेजिनेशन है, यू कैन जस्ट गो वाइल्ड विद इट, तो वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता। व्हाई आई कैन यूज सपोज इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों का एक प्रेमाइस हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूं कि अच्छा जैसे कि एक पहाड़ है उस पे ना ऐसा आग लगी है, ओके। सो आपने अपने पास्ट में ये देखा है कि अगर वहां पे ऐसा स्मोक कहीं से निकल रही होती है तो वहां से क्या होता है, कई जगह से स्मोक निकलेगा तो बेसिकली वहां पे फायर होगी। So in this case you have a premise and then you basically come to a conclusion. So उस केसेस में आप suppose करते हैं, and because you necessarily in this case you know for a fact that this person will be late क्योंकि वो ट्रैफिक में usually फंस जाते हैं, so you will use B, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप इट इज क्लियर। Ma'am, you said Yes, the word ma'am. premise, Yes, ma'am. PREMISE, right? या Means suppose. यस, या बेसिकली you take something as an assumption and then you come to a conclusion, okay, so that's what we do, like you guys do in maths also na, let's take this as x and let's take this as y and then you come like come to some Ma'am, conclusion assumption about, ना, assumption. Yeah, हाँ assumption. हाँ हाँ वैसे ही करते हैं हम लोग। Okay, so the government's economic policy includes certain projects for dash the living conditions of the poor, bettering, harmonizing, manipulating, or doing away with. A. Ma'am, bettering. A ma'am. Bettering, ma'am. Okay. Okay, let's see. अच्छा, सबका आंसर ए ही आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अरे नहीं, the government economic policy includes certain projects. So if you are talking about living conditions of the poor, है ना? So we can't really use doing away with, because doing away with would mean like you are getting rid of something. No, why we don't really, it's not a very, I would say, appropriate thing to say to any person, ठीक है, कि get rid of whatever, right? Manipulating भी नहीं हो सकता, because when we talk about manipulating things, you are trying to be tactful, or we can say, you are trying to control something. Not necessarily goes with the situation. Again, when I say harmonizing, again, we are trying to harmonize something. That means we are trying to, bring peace, harmony, or something like that. So in this case, your answer would be A, because you are trying to better something, है ना? The government economy policy which includes certain projects for bettering the living conditions of the poor. So correct. Next. Kamal's friend had nothing to offer him other than dash in his grief, kindness, solution, consolation, or happiness. C, ma'am. E ma'am. Consolation. C, ma'am. Consolation. Okay. Ma'am, grief meaning? Grief is basically like when you are going through that patch in your life, like somebody dies and that sadness and all those, right? So it's बहुत related ज्यादा to that. दुख थी Sadness, पर हाँ. अब टाइम Hmm. Hmm. Distress. Okay, so see, in this case, what we need to know is, so obviously Kamal's friend, right, is going to help him. He's obviously going to be kind to him. But when we talk about grief, ठीक है, in context of grief, what we usually do is we actually offer people consolation. जैसा दिलासा type आप किसी को देते हो when especially people are in grief. So the word should be consolation.
ठीक है, obviously the आप you can't say happiness or solution, so out of these your answer would be C. ठीक है, any doubt anyone? So this would be the No, answer. ma'am. Consolation. Okay. Next. In spite of our best efforts, we failed to dash any new facts from him. Elicit, evoke, Evoke, ma'am. eject, or enlist. Okay. List. B. Evoke. Hmm. C. Okay. Chalo, let's see the answers. Okay, there are no answers at this point. अच्छा मतलब देखो इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट वी फेल्ड। अभी आप अगर अपने आप को एनलिस्ट कराते हो ना किसी चीज में, तो यू बेसिकली एनरोल योरसेल्फ। जैसे कि कोरिया में होता है ना, दे एनलिस्ट देमसेल्फ इन आर्मी, so you become a part of it। तो enlist कैसे हो सकता है? We fail to enlist any new, we are talking about new facts from him। Okay, you are not getting enlisted here, किसी चीज का पार्ट नहीं हो रहे हो, तो enlist नहीं हो सकते आप उसमें। eject क्या होता है? eject when you basically sometimes we forcibly take out something ऐसा, so you take out something ऐसा force के साथ usually यूज किया जाता है वैसे, but otherwise भी यूज कर लेते हैं। अभी इवोक इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इवोक इज यूज फॉर व्हेन वी ट्राई टू रिकलेक्ट समथिंग, या हाँ मतलब ऐसा कोई मेमोरी आपका, आप उसको रिकलेक्ट कर रहे हो, एकदम से याद कर रहे हो, ऐसा रिकलेक्ट कर रहे हो। एलिसिट हो सकता है बिकॉज आप क्या करते हो यूजुअली, काफी बार ऐसा होता है ना, आप लोग डिस्कशन कर रहे होते हो, ठीक है, आपस में डिस्कशन कर रहे हो, तो आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हो, फिर फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हो। तो आप क्या करने की कोशिश करो, आप उससे ना इंफॉर्मेशन एलिसिट करने की कोशिश करो। आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपसे भी एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एलिसिट करने के लिए, आपके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, सो व्हेन यू ड्रॉ आउट समथिंग किसी से, ठीक है, बाहर निकालने की कोशिश करें कि क्या क्या आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करें, तो उसमें एलिसिट यूज किया जाता है, इवोक नहीं यूज किया जाता। इवोक अलग होता है, इवोक इज रिलेटेड टू योर मेमोरीज व्हेन यू ट्राई टू रिकलेक्ट देम। Enlist means enroll. हाँ, it's related to that, yeah, like when you join something। Army. Yeah, yes, any doubt anyone यहाँ पे? दो No, डाउट ma'am. मैम। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The government should provide attractive tax dash to create the market for quality goods. Controls, incentives, revenues, or structure. Controls, ma'am. Okay. Con- Hmm. D. Hmm. Give me a minute. incentives। इंसेंटिव ही लग रहा है इसका तो। Hmm. It's See, also what known we as need to know is when I talk ma'am. about, हाँ, A. नहीं, see, we are saying the government should provide. We are talking about providing, है ना, attractive tax। तो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू नो इज व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, तो टैक्स स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। वी आर नॉट टॉक अबाउट कंट्रोल, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता टैक्स कंट्रोल्स टू क्रिएट द मार्केट फॉर क्वालिटी। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट वी नीड टू इंक्रीज द आउटपुट और द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे अगर आउटपुट की बात आ गई, आप किसी चीज की क्वालिटी आउटपुट मतलब बेसिकली उसका क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, तो रेवेन्यू नहीं हो सकता बिकॉज रेवेन्यू कैन अगेन बी रिलेटेड टू सैलरी और समथिंग लाइक दैट, तो वो नहीं हो सकता। इंसेंटिव इसीलिए हो सकता है बिकॉज इंसेंटिव्स कैन बी एनी कंसेशन दैट इज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट,
ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफर करती है जिससे कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाए या फिर गुड्स का क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। तो उस सेंस में मतलब कई बार होता है ना, अलाउंस भी मिलता है लोगों को किसी चीज का, तो उस सेंस में आप क्या बोलोगे? टैक्स इंसेंटिव्स। ठीक है, तो आपका आंसर बी होना चाहिए, इंसेंटिव्स, अट्रैक्टिव टैक्स इंसेंटिव, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट द मार्केट फॉर क्वालिटी गुड्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सो दिस वुड बी द आंसर। यस मैम। Yes, ma'am. Rajiv failed in the examination because none of his answers were dashed to the question asked. Elusive, revealing, pertinent, or referential. सी मैम। Hmm. बी ए मैम डी। Hmm. Okay, at this point, I guess B. everyone has chosen all the options. Okay. I guess ये तुम लोगों को synonyms और antonyms से ज़्यादा difficult लग रहा है at this point. Let's see. Hmm. See, referential is related to reference. आप किसी चीज का रेफरेंस लेते हो, सो वो उससे रिलेटेड हो जाता है। सो इसमें आप रेफरेंशियल नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर रेफरेंशियल टू द क्वेश्चंस। नो, वी आर नॉट नेसेसरली टॉकिंग अबाउट दैट। रिवीलिंग भी नहीं हो सकता, आप क्यों बोलोगे रिवीलिंग टू द क्वेश्चन? अब ये एल्यूसिव भी नहीं हो सकता, बिकॉज एल्यूसिव में आप क्या करते हो? आप इनडायरेक्टली कोई चीज सजेस्ट करते हो। ठीक, अभी पर्टिनेंट इसलिए हो सकता है बिकॉज पर्टिनेंट का मतलब ही होता है रेलेवेंट। तो आप मीनिंग से खुद देख सकते हो कि पर्टिनेंट शुड बी द आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, यस यस मैम। मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are dash views on the issues of giving bonus to the employees: independent, divergent, modest, or adverse. बी मैम। डाइवर्जेंट B, बी ma'am. मैम। Hmm. On giving bonus. So when I say that, see, the answer cannot be adverse because adversity or adverse is used for something which is not favoring you. Okay, so it's used for unfavorable as we say. ठीक है, modesty again is related to somebody being humble, humility as we say. So how can it be related to people's opinions about or views about something? Okay, independent, there are independent views, like independent of what? Independent of each other. So that doesn't necessarily goes with it. We can say divergent because there's a lot of diversity when it comes to views, right? Because we are talking about opinions, because usually opinions different होते हैं लोगों के, right? So we can say out of these options, B would be the apt answer. Okay, so I hope it is clear to everyone. Yes, क्लियर है ma'am. मैम। यस Next. He has dashed people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort to neighbors. Curtailed, requested, stopped, or warned. सी मैम। स्टॉप्ड मैम स्टॉप्ड सी। Okay. C, ma'am. Okay. He has dashed people visiting him at his मैम house. कर्टेल। डाउन See, when I say visiting him at his house, give me a second. When I say he has dashed people visiting him at his house because he fears it will cause
Discomfort. When I say curtail, curtail तो आप ऐसा cut down करते हो किसी चीज को, ठीक? He has cut down people visiting him at his house. Not necessarily. We can say he has completely stopped people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort to neighbors. ठीक है, requested और warned तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी. उसमें बंद नहीं। ठीक है, so out of these options we would go for C. Stopped. Okay guys. Next पे चलते हैं. Although he never learned to read, his exceptional memory and inquiring mind eventually made him a very dash man, dedicated, erudite, pragmatic, or benevolent. D ma'am. Benevolent. Right. Hmm. B. B. B ma'am. Hmm. Erudite. Okay. Yes ma'am, erudite. Okay, although he never learned to read. So when I read the whole sentence, I see that it says he never learned to read, but his exceptional memory and inquiring mind. So definitely the person is intelligent. Okay, so benevolence won't really go in this case because benevolence is usually related to somebody being really kind or generous and all these qualities, right? Pragmaticism भी नहीं हो सकता because it's usually related to practicality and all those, real world and all that. Dedicated भी नहीं हो सकता, not because we're again talking about memory, inquiring mind. So erudite इसलिए हो सकता है because this word is related to somebody, who is really scholarly या intelligent या something like that. Knowledgeable. तो हाँ, तो उनके लिए आप यूज करते हो, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा बी. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सो Yes ma'am. नेक्स्ट पे चलते हैं Yes फिर. ma'am. Okay, reconstructing the skeletons of extinct species like dinosaurs is dash process that requires much patience and effort by paleontologists. Nascent, aberrant, worthless, or exacting? A or B. A. B ma'am. Hmm. ठीक. B ma'am. Reconstructing the skeletons of extinct species like dinosaurs is a process that requires patience and effort. A. Okay. Let's see the answers. No, no, no. See, aberrant as a word. Okay, let's see. Nascent का मतलब, guys, is actually related to something which is budding. Like it's starting to grow, ऐसा बोलते हैं ना, budding singer or something like that. So nascent cannot be the answer because we are talking about something which requires patience and effort and actually skills, which we will see when I tell all the meanings. So aberrant cannot be the answer again because it's related to something which is, deviating, like which deviates you. Worthless. How can you be worthless and be uh, do such work, right? So that cannot be the answer. So obviously the answer is D. Exacting. Why? Because exacting as a word talks about somebody who has a lot of skills. Okay, so basically it requires somebody who has a lot of patience and has a lot of skills. Okay, so a combination of that would be this word. Is this clear? So इसलिए your answer would be D out of these options. Okay. Okay ma'am. Next question. As soon as this workshop is over, I am going to dash every duty and go on a holiday. Sidetrack, abandon, overthrow, or close down. Abandon. Hmm. Okay. C ma'am. B or A. C ma'am.
As soon as this workshop is over, I am going to dash every duty. We don't really say close down every duty. Like we don't say as a close down. usko, as a close down is what? Like you completely shut down something. I'm going बंद to कर shut दो. down every activity. No, not really. It won't really go. Let's see others. Okay, so when I say overthrowing somebody, है ना, when you overthrow someone, we can say you either defeat them or you succeed. है ना, आप उनके successor बन जाते हो, आप उनको मतलब ऐसा overthrow कर देते हो. Maybe if somebody is a king, you overthrow them, then you become the king. है ना? So since we can say overthrow somebody. Why would you overthrow every duty? We are not talking about that again. Now if I talk about A, साइड ट्रैक में आप क्या करते हो? अगर आप साइड ट्रैक कर देते हो किसी चीज को तो बेसिकली आप ना डिस्ट्रैक्ट टाइप का आप बोल सकते हो. तो वो भी नहीं हो सकता. हम कह सकते हैं आप अबैंडन कर दोगे. लाइक यू विल लीव इट. जो बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू लीव एवरी ड्यूटी एंड गो ऑन अ हॉलीडे. सो एज पर दैट वी विल गो विद दिस. इज दिस क्लियर? ठीक है, Yes, तो ma'am. बी आपका हो जाएगा इसमें से आंसर. चलो नेक्स्ट पे चलेंगे. She dashed great pleasure and satisfaction from cooking. Wants, has, draws, or delude. Draws. Yeah, Hmm. Drowsy. Okay. She dashed great pleasure. Okay, when we are talking about that somebody is, taking some kind of pleasure and satisfaction when it comes to like a hobby of theirs or whatever. So she wants तो नहीं हो सकता, she has भी नहीं हो सकता. Delude भी क्या होता है when somebody becomes like like a fool. Deluded है, foolish है, बेवकूफ and all that. So we can't say delude here. Draws बोल सकते हैं when you basically आप किसी चीज से कोई चीज draw करते हो. Like if I'm talking about cooking. So if she cooks, so she draws out that pleasure ना उस चीज से. तो वो किसी चीज से pleasure लेती है या कुछ भी उसको satisfaction होती है तो we can say draw in this case. ठीक है? So absolutely correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये. Poetry is a dash form of expression in which the particularity of the word and the image to evoke feeling assumes great importance. Suppressed, patronized, compressed, or digressed. B. B मैम. Yes, ma'am. Patronized. B मैम. हम्म. सब लाइन से बी. ओके. अच्छा वर्ड लग रहा है इसलिए. मतलब बहुत अच्छा लगा ये वर्ड. चलो इसी को चूज कर लेते हैं. ओके. Okay, so poetry is a dash form of expression in which the particularity of the words and image to evoke. की बात कर रहे हैं तो we are not talking about suppressing people, because when I talk about suppressing people, I am actually trying to stop them right from having any opinion about things. So that would be related to that. So suppression नहीं हो सकता है. डाइग्रेस इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू डिविएशन. आप किसी चीज से डिविएट हो जाते हो, डाइग्रेस हो जाते हो, राइट? सो पेट्रोनाइज किस लिए नहीं हो सकता? काफी लोगों को ऐसा पेट्रोनाइज करने की आदत होती है. वो लोग क्या करते हैं पेट्रोनाइज करने में? दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग पीपल बिकॉज दे थिंक कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ. तो पेट्रोनाइज कैसे हो सकता है? पोएट्री इज अ पेट्रोनाइजिंग फॉर्म या पेट्रोनाइज फॉर्म जैसा बोल लो. तो इट्स नॉट रियली अबाउट क्रिटिसिज्म और बिलिटलिंग पीपल ना. कंप्रेस्ड बोल सकते हो. क्यों बोल सकते हो कंप्रेस्ड? बिकॉज व्हाट दीज पोएट्स डू इज दे बेसिकली मतलब क्या करते हैं, सब वर्ड्स को बंच अप करते हैं, साथ में ऐसा कंप्रेस करते हैं टू एक्सप्रेस समथिंग, है ना. लाइक इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. सो उस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो? कंप्रेस्ड फॉर्म होता है. ठीक है, उसको कंप्रेस कर देते हैं वो लोग टू बेसिकली एक्सप्रेस वट एवर दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस. सो आई होप इट इज क्लियर कि और सारे आंसर्स नहीं हो सकते हैं.
The answer is actually मैम एक बार पैट्रोनाइज वाला फिर से थोड़ा बताइए मैम, क्यों नहीं यूज होता हाँ कौन? देखो, अगर मैं ना आपको आयुष आपको पेट्रोनाइज कर रही हूँ, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि आयुष क्या बात है, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए, मतलब अगर आप थोड़ा लेट आए तो मैं बोले अरे बड़ा जल्दी आ गए, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू क्रिटिसाइज यू, ठीक है, किसी चीज की वजह से, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे बेटर हूँ, ठीक है, तो उसको पेट्रोनाइज करना बोलते हैं किसी को, ओके मैम, ओके मैम। तो वो होता है पेट्रोनाइज करना। Anybody else has any other doubt regarding the question? नो Okay, मैम। so ठीक है, मैम, in the next class, हाँ जी like this बोलिए। question, throw a stone at the fish dog. I didn't get you. What did you say? मैम, जो old question, Which question are you talking about? This one? throw a stone. मैम, it's quite far. I think 10 or 12 bit before. Oh, so do you remember what was Yeah, it like? Because how would yeah, we exactly know? yeah. Throw a stone. अच्छा, that stone वाला question. Yes. Yeah, this one. मैम, Yes. इसमें throw a stone at the fish dog means we are trying to hit the dog. Yeah, since we are trying to like see the purpose of throwing the stone is actually hitting the dog, right? So that's why we have used the preposition at, because when I say this phrase, right, throw at, it actually means you are throwing it at someone with the purpose of actually hitting them. Okay, so that is why we say throw a stone at. Okay, so that's why we have used it. Ma'am, why don't we use on? No, we actually, when we talk about hitting someone, we don't say throw a stone on someone, because we say throw on a shirt. We don't say throw a stone on. We say at, because we are talking about actually hitting someone. Okay. So as a phrasal like phrase, we don't use it. When we use Hmm? person, then also at. Yeah, that's what I'm trying to say, na, that when you are throwing something at someone with the purpose of actually hitting them, the preposition that you're supposed to use is at, throw at. Okay, Okay. so that's what we do. Okay. Okay, guys. So in the next class, we will be doing fill in the blanks ka class 2. Any other question, anyone? Just give me a second. I need to see something. You guys cannot see my screen, right? Yeah, just give me a second. Hmm. Okay, guys, so one last announcement for everyone who is watching us right now. Thank you so much for being with me for today. And please do not forget to check out SSB Crack Exam ka page, where you will get more information and help from our end. And I will see all of you in the next class, where we'll be doing another topic of fill in the blanks, class 2. Okay, guys, so take care of yourself and Jai Hind to all.